जब स्टाइल मिलता है स्ट्रैटेजी से, तब होती है शुरुआत सक्सेस की। मुंबई में हुआ फैशन एंटरप्रेन्योरियल शो पिच टू गेट रिच का ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां दिखे अक्षय कुमार, करण जौहर, मलाइका अरोरा और कई और सेलेब्स एक ही स्टेज पर। इवेंट के दौरान सभी स्टार्स ने अपने फैंस के लिए दिए इंस्पायरिंग और स्पेशल मैसेजेस, जहां ग्लैमर के साथ बिजनेस का फ्यूजन देखने मिला एक नए अंदाज में। तो कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ एक शो नहीं, एक विजन है जहां पैशन बनता है प्रॉफिट। तो आइए डालते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक खास नजर। What we're here for is exceptionally unusual. It's the first of its kind, and we're very thrilled that we were able to collaborate with Jio Hotstar for our vision on this. And thank you very much, Sushant. Thank you for always being so collaborative and continuing to do so with all kinds of content. Pitch to Get Rich is really India's first fashion entrepreneurial reality show. It's never happened, it's first of its kind. It's really to put fashion out there on the map, and maybe people who've had fashion startups or fashion beginnings are already forces of fashion online, etc. This empowers them to take it that much ahead. We have 30 to 40 crores on the table, and this entire show has been a blend of drama, entertainment, superstar presence, but also really about the fashion entrepreneurial fund. FEF truly has been empowered to take this forward, take not only fashion forward, but also do it so entertainingly through the lens of a reality show. The brainchild has been with Mr. Nigam. He has truly been institutionally involved in taking this brand forward, and all of us at Dramatic Entertainment are really, really proud that we were able to put this show together. But more than anything else, it's about the fund and it's about taking fashion forward. Akshay has been a huge supporter, and I would love for him to kind of take this forward. मैं आपको बताऊं, एक बात पक्की है कि फैशन की दुनिया में जितना टैलेंट है, उतना ही फैसिनेशन मुझे जिस बात में हुआ है वो है बिजनेस ऑफ फैशन। मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं कि साल का जो बिजनेस है, फैशन का बिजनेस है हिंदुस्तान का, पता आप लोगों को कितना है? 9 लाख करोड़। 9 लाख करोड़ सिर्फ फैशन में जाता है। अगर मैं कंपैरिजन के हिसाब से जाऊं तो हमारी इंडस्ट्री का जो बिजनेस है साल का, फिल्म इंडस्ट्री का, पूरे तेलुगु, तमिल, ये सब मिला के, हिंदी, गुजराती, भोजपुरी, करीबन 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ और फैशन का बिजनेस है 9 लाख करोड़। यानी कि जो काम करण जौहर साहब करते हैं उससे कई उच्च काम हमारे मनीष मल्होत्रा जी कर रहे हैं, मुझे फैशन का इतना बड़ा काम करते हैं। सो कांग्रेचुलेशन मनीष। स्ट्रगल जब से मैं तुझे जानता हूँ, तुझे तो कब से, मैं करीबन 40 साल से जानता हूँ, ये अभी तक स्ट्रगल ही कर रहा है। 35 नहीं, आई थिंक आई नो यू बिफोर दैट। सो खैर मैं यही कहूँगा कि FEF में मुझे इन्वेस्टेड रहने का मौका मिला। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लिटरली एक फैशन ब्रांड की जर्नी स्टार्ट टू फ्यूचर सक्सेस तक लेके जाते हैं, और उसी जर्नी का पहला स्टेप है पिच टू गेट रिच। इट्स अ वेरी फर्स्ट ऑफ अ काइंड शो। सिंपल है, आप अपनी एक कंपनी बनाओ, उसे पिच करो, 30 करोड़ के फंड हैं, उसे इस्तेमाल करो। आप जितना पिच करोगे हम उसकी वैल्यूएशन लगाएंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा तो हम आपके उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, और आपका जो बिज़नेस है जो लोकल है हम कोशिश करके उसे ग्लोबल लेके जाएंगे। एक बहुत ही बेहतरीन शो है। मुझे मौका मिला था तो मैंने एक माँ और बेटी का जो डियो था, मैंने देखा था कि उनके पास जो है 10,000 हैंड ब्लॉक्स प्रिंट्स थे, और उन्होंने वो उसके बारे में बताया, जो कमाल के प्रोसेस उन्होंने बताया वो कैसे करते हैं और कैसे फिर एक कमाल का मैंने देखा कि एक आदमी ने क्या किया, उसने आर्मी के कपड़े जो आर्मी वाले जो पहनते हैं जब पुराने हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं,
उनका क्या करते होंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो यूनिफॉर्म को लेके काट के उसके जैकेट्स बनाए, उसके कैप्स बनाए, ताकि वर्दी का कभी अपमान ना हो, और जब आप वो पहनो तो सोल्जर को इज्जत भी दो और हाई फैशन का जलवा भी देखो। सो ये कमाल की, बहुत सारी ऐसी कमाल की चीज़ें हैं जो इस शो के अंदर आपको देखने मिलेगी। एंड आई होप यू गाइज एंजॉय दिस। एंड आप लोगों ने फैशन शो तो देखा ही, द ट्रेलर हैज़ बीन रिलीज्ड। I can give you examples of so many fashion startups, fashion brands that are led by women, are for women. अगर आप nationally नहीं देखो, internationally देख लो, तो I think some of the most powerful women are in fashion and beauty. और अगर हमारे अपने देश में देख लो, तो that percentage is growing exponentially as we speak. I really believe that it's no longer a domain of gender. You know, it's a domain of talent and vision. And I think वही हो रहा है कि जिसके पास वो excessive talent या vision हो, तो वो अपना fashion startup या for that matter कोई भी startup आगे बढ़ा सकता है। तो इसको genderify करना और generalize करना इस तरह I don't think is the point of today anymore. गैप तो आप हमेशा पाओगे, हर जगह पाओगे। कभी there are women that are doing much more than men are in places. And I think आपका नजरिया अगर उस तरह हो तो आप कहीं भी खोट ढूंढ लेंगी। Unless in your personal, Firstly, you know, I think passion I'm for very, very fashion. happy and proud to be part of this venture. It's the first of its kind. और जो numbers हम इस बार हमने सुना, I mean, even I'm hearing it for the first time. It has completely bowled me over, and I'm so happy that I'm part of the fashion, climate that is changing not just here but worldwide. To go back to ma'am's question over there about it being, let's not put a gender to the question. I think, in fact, I have a startup which is an online startup, and we are an entirely female startup, the label Life. It's for women, by women, run by women. So I'm very proud and happy to be part of a startup that actually pushes women from all walks of life. Coming back to you, ma'am, I think it's been a great journey. Yes, balancing has been between mentorship, between entrepreneurship. I think it has been a learning experience for me as well. I'm a work in progress through this entire process of doing this show. So I feel it has given me as well such an amazing vision out there to better myself or to have better opportunities that I can avail of. And I just want to thank everybody sitting at this dais for giving me this platform, which I can really, really make the most of. And if in our way of saying something and putting something out there, if we can actually help or push or kind of give that platform to so many startups, I think we're on the right track. Now, Sanjay ji, I think season 2 is very, very necessary. हाँ, थोड़ा और briefcase में और थोड़े पैसे जमा कर दो and let's start, right? Let's do it. So I think actually the gap will always be there because commerce will always take over, unfortunately or fortunately. Art is always there. People are opening up to it a lot, but ultimately it's like, it's also in movies, right? Like there are artistic films, but it's the commercial films that tend to take center stage. But I think it's changing. It's changing in the movies, it's changing in people's mind, and it's also changing in fashion. But still, if you see it worldwide, it is what is commercialism? Commercialism is clothes reaching to the entire world, having a large spectrum of different verticals. And I think that's what will always reach out a lot more. But I am seeing a lot more people open to wearing artistic things or being differently. So I think the gap is getting much smaller. Well, it was not learning. I mean, मैं इस शो के अंदर इसीलिए आया था because I knew the figures and facts are very huge. And why not? And when the show came, Karan was there, Manish was there, all the बड़े-बड़े दिग्गज लोग से साथ में थे. And इनकी जो planning थी वो बहुत बड़ी थी. जिस हिसाब से आपने शो देखा. And मुझे ये बहुत आइडिया अच्छा लगा था कि नए-नए जितने भी कंपनीज हैं उनको मौका मिलेगा आने के लिए. And I've always supported, चाहे वो मेरी इंडस्ट्री में हो, I've worked with new people as a directors also. 23 new directors I've worked with, 26 heroines I've worked with. They are new, they've been. So I like the fact that how, and जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने देखी, जैसे वो मैंने आर्मी मैन के बारे में बताया आपको. He is here only somewhere. Yeah. वर्दी जी कहाँ है वर्दी जी? ये इनका ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया मुझे लगा. सो देयर आर सो मेनी लर्निंग थिंग्स विच आई हैड. सस्टेनेबल क्लोथ्स के बारे में मुझे पता चला. I came to know about that. Manish told me so many things about it. So it was a lot of learning experience I got in this. I think मुझे ज़रूरत नहीं है समझाने की, किसी को समझाने की, किसी को सीखने की,
क्योंकि सब अपने अपने दिमाग से, देखिए सभी यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सब पैसा कमाने ही आए हुए हैं। आज आप भी अब मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं, आप इतना कुछ चला रही होंगी, वो पैसों के लिए ही कर रही होंगी, मजे के लिए तो नहीं कर रही होंगी। सो देयर इज नथिंग, आई डोंट हैव टू टीच एनीबडी, एवरीबडी, इट्स important, but the most important thing more than money is the peace of mind, which I go for more than money. I work hard, I work for money, but at the same time, if I have to compare it, if I have to go for what, I would go for peace of mind. कौन से एक्टर का फैशन सेंस बहुत स्ट्रांग है? आपके हाँ सब लोग अपने अपने हिसाब से फैशन करते हैं। रणवीर सिंह अपना करता है, शाहरुख खान जी अपने करते हैं, सलमान खान का अपना खुद का स्टाइल है, मेरा अपना खुद का स्टाइल है। तो सब ऐसा बोलना बहुत नामुमकिन हो जाएगा कि किसका बहुत बढ़िया है। सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्टाइल से करते हैं। अभी वो मुझे कह रहे थे कि आपका टिप बहुत काम आया, मेरे हस्बैंड भी चेंज हो गए हैं। अभी किसने मुझे कहा, तो मैं टिप्स ही देता रहता हूँ दिन भर काम में भी। Well, when you're working with Karan, you're always updated on fashion. So I think we are very lucky. We have the first base knowledge of what's working, what's not working, what's looking good, what's not looking good. And then you have Manish Malhotra. So I think we are in very good company. But that aside, I just want to quickly take a moment to say that, this is a very special show. And we are really thankful to Sanjay Nigam for coming up with this concept to us. And we really believe that it's such a wonderful opportunity to give all these new entrepreneurs a chance to present their ideas and have an expert team of judges, as you have seen on this table, who can guide them and allow them to grow bigger, larger. So it's actually such a fantastic idea. Very, very thankful to Sanjay Nigam for reaching out to us with this, and of course Hotstar to Sushant for supporting us on this whole endeavor. And it truly feels nice to be able to do something that allows you to give, to redefine fashion, redefine and give a new voice and meaning to entrepreneurs who have this opportunity now, thanks to the show. बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो आपको बताऊं, पूरा शो ही मेड इन इंडिया है, और जितने कंटेस्टेंट है सारे ही मेड इन इंडिया है। आइडिया, मैं तो सच्ची बताऊं, जब ये पूरा आइडिया मेरे सामने आया था, मुझे ये आइडिया इतना कमाल का लगा कि हम फैशन में भी एक शो बनाना चाहते हैं जो लोगों को लाके उनको आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। ये एक मतलब, ये तो मुझे लगता है साल में एक बार करने वाले। मैं तो इनसे कहूँगा कि साल के अंदर 2 शोज़ ऐसे आने चाहिए और लोगों को मतलब लाके उनको हमारे हिंदुस्तान को आगे लाने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री फैशन को लेके बहुत ही पर्टिकुलर हैं, एंड ही कीप्स ऑन प्रमोटिंग मेड इन इंडिया. So that is what the whole idea behind this is. I feel fashion is always looked at sometimes a little frivolously. Sometimes it's looked at as, oh, it's only about partying, or it's about looking good, or it's all about fashion show models, all of it. But there's a lot of hard work. And I think this show makes it very real, because all the contestants in this show are hardworking. The underdogs, and some of them are already doing so well and want to do better. So I think fashion is getting even more real, because now you are understanding, and even the audience wants to know कि ये कैसे बना. People now are interested in the story of a garment. They're just not interested in the garment. They want to know कैसे बना, कितने कारीगरों ने काम किया इस पर, कितनी embroidery थी, कितना time लगा. So I mean, I'm at my work at 9 o'clock in the morning, and so it's a lot of hard work, and I think this show puts that out, and all of them stand for that. And I think that is very important to put across, because I feel otherwise we see fashion as के बस ये fashion show हो रहा है, सब चल रहे हैं, पर उस पे इतनी मेहनत है. Also, I think people just concentrate on clothing. I think that's not what fashion is all about. Yes, clothing is a very integral part of the whole business. But what we've shown over here is besides clothing, it's every aspect of fashion. So whether it's footwear, whether it's accessories, whether it's sustainability, I mean, it's vegan clothing, it's everything, every aspect which people are not very aware of, because you only kind of see the first thing, which are, your clothes, what you wear. So we've concentrated on so many little aspects over there, which you said, there are so many things that actually go into it, whether it's a price point, whether it's fabric, whether it's your actual pitch of what you want to sell. Because we don't know till you actually come out there and give us your best pitch. So if you ask me, I think pricing plays a huge part of the whole business. And if you can actually conquer that, if you can actually be able to give that to your audience, and I think you've
you've done something right. So watch the show to actually see the various aspects of what we've created and what everybody on this dais has. We have a fantastic crew that's actually made this show, that tirelessly have done such a super, super job. So a huge shout out to each one of you, Monia, your entire team. And I feel, once again, I just feel so happy and proud to be part of this show. It really is super. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।